वेलकम टू एजीपीजी स्टडी लखनऊ यूनिवर्सिटी के बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर की प्रैक्टिकल फाइल फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी. So let's begin. First, the thought is happiness is the only thing that multiplies when you share it. An experiment first. To study about identification of crops, seeds, fertilizers and pesticides. Materials required. First, crop के अंदर आ जाती हैं सीरियल्स, पल्सेस, मिलेट्स. सीड में आ जाते हैं राइस, व्हीट एंड मेज. थर्ड, फर्टिलाइजर्स यूरिया, डीएपी, डायमोनियम फॉस्फेट, एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटैश. एंड लास्ट, पेस्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स, एट्राजीन, ग्लाइकोफॉस्फेट. Identification of crops. Cereals. Cereals are identified in the fields based on the characteristics processed by them. First, cereals herbaceous plants होते हैं belonging to grass family, Gramineae or Poaceae. Second, they have round hollow stem. Like cereals have narrow leaves and flower are inflorescence like spikes, airhead and panicles. Inflorescence means arrangement of flowers in a plant. तो किस टाइप से अरेंजमेंट होता है फ्लावर्स का एक प्लांट में, तो उसको इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं. लाइक सिंगल, स्पाइक, रेसमे, पेनिकल, साइम, स्पेडिक्स. एंड नेक्स्ट, बट इन सीरियल्स में इन्फ्लोरेसेंस, स्पाइक्स, ईयरहेड एंड पेनिकल्स टाइप का देखने को मिलता है. पॉइंट इज दे आर जनरली मोनोकॉट्स. Monocots is a short form of monocotyledon. Mono means once and cots means, and in dicotyledon this is first two leaves. You can see these first two leaves, two cotyledon, and this is single cotyledon. You can see it's single cotyledon and then is two cotyledon. This is two cotyledon. Cereals are used in making flour that has been used since ancient time to feed humans. Last point. Cereals are used in making flour that has been used since ancient time to feed humans. First point is pulses are crop that belong to family Leguminaceae or and Fabaceae. So pulses क्रॉप की जो फैमिली होती है वो लेग्यूमिनेसी और फैबेसी से बिलोंग करती है, और जो सीरियल में जो फैमिली होती है उस क्रॉप की फैमिली ग्रामिनी और पेसी से बिलोंग करती है. एंड सेकंड पॉइंट इज पल्स आर जनरली डाइकॉट. ये डाइकॉट होती हैं means this is a short form of dicotyledon. Di means two and cotyledon means embryo leaf with broad leaves bearing pods. Cereals में narrow leaves होती हैं और and in this Leguminaceae family the leaves are broad bearing pods. एंड ये हमारी डाइट में प्रोटीन को ऐड करती हैं और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को में फिक्स करती हैं. एंड फिक्स अमीनो एसिड्स होता है लाइक लाइसिन एंड मेथियोनिन. Millets are identified in the field based on the characteristics posed by them. First point is millets belong to a grass family, Gramineae or Poaceae, like cereal. Second, they produce small edible seeds. Point, millets have narrow leaves, flower as inflorescence, spikes, earhead and panicles. Millets are used for forage crops. Forage crops means ऐसी crops जो हम अपने लाइफ स्टॉक को फीड करने के लिए यूज़ करते हैं. ठीक, मतलब चारा देने के लिए उनको इस क्रॉप का यूज़ करते हैं. एंड ऑल्सो प्रिजर्व फॉर hay and silage and as food cereals. Last, identification of seeds.
Seeds are identified as under rice. First, rice seed are oval or round in shape. ओवल और राउंड इन शेप होता है. These are straw yellow in color. Rice seeds has following features: water 68.44 gram, protein, energy. Generally oval in shape. ये भी ओवल इन शेप होता है बट राइज इन ओवल और राउंड इन शेप. ओवल और राउंड में हो सकता है और व्हीट ओनली ओवल इन शेप होता है. These are straw yellow in color and it is size 5 to 7 mm होता है. Maize. Seeds of maize are bold in appearance. ठीक, ये bold appearance में होते हैं. It is pale yellow, bright yellow in color. Seeds are narrow at the end and wider at the top. टॉप पे वाइडर होता है और एंड पे ये नैरो होता है, थोड़ा सा पतला होता है. Identification of fertilizers. Urea. It is extensively used as nitrogenous fertilizer which supply 46% nitrogen to the soil. तो इसमें 40% नाइट्रोजन सॉइल को प्रोड्यूस करता है. Granules of urea are crystalline white. तो ग्रैन्यूल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है ये. DAP. It is extensively used as fertilizer which supplies 46% phosphorus and 80% nitrogen to the soil. And second point is it is grayish in color. MOP. Muriate of potash. It is extensively used as fertilizer which supplies 60% potassium to the soil. It is reddish in color. Reddish in color में होता है और DAP grayish in color होता है. Weedicides. Atrazine. First, it is selectively weedicides. It kills weeds soon after emergence. It is used in weed management of crops like maize and sugarcane. ये मोस्टली मेज और सुगरकेन की क्रॉप में यूज़ किया जाता है फॉर वीड मैनेजमेंट के लिए. ग्लाइफॉस्फेट. Glyphosate and phosphomethyl glycine is a broad spectrum systematic herbicide and crop desiccant. क्रॉप डिसिकेंट ये केमिकल होता है जिसमें कि हम क्रॉप को हार्वेस्ट होने से पहले इसको प्लांट और प्लांट की लीव्स को किल कर देता है एंड ड्राई देम आउट मोर क्विकली. एंड second point is it is an organophosphorus compound, specifically phosphonate. Third, it is used to kill weeds, especially annual broadleaves, weeds and grasses that compete with crops. Experiment 2. To study about identification of tillage implements. Material required. Primary tillage implements is wooden plow, moldboard plow, disc plow, chisel plow, rotatory plow. And secondary tillage implements is cultivator, harrow, kuntaka. Implements for sowing is seed drill, verticum seed drill, and then tillage. The physical manipulation of soil with tools and implements to result in good till for better germination and growth of plant is called tillage. मेन जो सॉइल का जो हम लोग मैनिपुलेशन करते हैं मीन्स हेर फेर करते हैं टूल्स के साथ एंड इम्प्लीमेंट टू रिजल्ट इन, जिससे कि जो हमारी सॉइल है वो अच्छी हो सके फॉर द बेटर जर्मिनेशन एंड ग्रोथ ऑफ क्रॉप, इसी को टिलेज बोलते हैं. एंड प्राइमरी टिलेज द ओपनिंग ऑफ कॉम्पैक्ट सॉइल विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट प्लाउ कॉल्ड प्राइमरी टिलेज. जैसे कि हम तो प्राइमरी टिलेज में ये होता है कॉम्पैक्ट सॉइल होती है मीन्स जो हार्ड सॉइल होती है उसको ओपन अप करना विद द डिफरेंट प्लाउ. ठीक है. सेकेंडरी टिलेज वो होता है प्राइमरी टिलेज के बाद जो हम फाइनर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं सॉइल में, उसी को सेकेंडरी टिलेज बोलते हैं. प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट्स. प्लाउ आर यूज फॉर प्राइमरी टिलेज. Implement used for opening and loosening of the soil are also
are known as plough. Plough are of three types: wooden plough, iron or inertial plough, and special plough. तो फर्स्ट हम यूज करते हैं वुडन प्लाउ और इंडिजिनस प्लाउ. Indigenous plows is an implement which is made of wood with an iron shear point. ठीक, इसके साथ आयरन शेयर पॉइंट होता है इसमें. It consists of body, shaft, pole, shear and handle. So you see in this picture of wooden plow, it is drawn with bullocks. There is no inversion. ठीक, V shape में ये फरोज बनाता है and open the soil, but there is no inversion, नहीं होता है. Plowing operation is also not perfect because some unplowed strip is always left between furrow. Soil turning plow. Soil turning plow आयरन से बना होता है and drawn by a pair of bullocks. ब्लॉक की हेल्प से इसको यूज़ किया था और टू डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द सॉयल. दे आर ऑल्सो ड्रॉ बाय ट्रैक्टर्स. इसको मोल्ड बोर्ड प्लाउ. द पार्ट्स ऑफ मोल्ड बोर्ड प्लाउ आर फ्रॉक ऑफ बॉडी, मोल्ड बोर्ड और विंग, shear, landslide, connecting rod, bracket and handle. This type of plow leaves no unplowed land as the furrow slices are cut clean and inverted to one side resulting in better pulverization. तो इस टाइप के प्लाव में फरो स्लाइसेस आर कट क्लीन, बहुत अच्छे से फरो क्लीन कट क्लीन होती हैं and inverted to one side resulting in better pulverization. The animal drawn mold plow is a small plow to depth of 15 cm while two mold bowl plow which are bigger in size are attached to the tractor. ठीक, जो छोटे होते हैं उनको उसको ब्लॉक की हेल्प से कर लेते हैं, मीन्स एनिमल की हेल्प से उसको कर लेते हैं, और जो लार्ज साइज में होते हैं उनको ट्रैक्टर की हेल्प से किया जाता है. लेकिन जो एनिमल्स जो स्मॉल होते हैं उनकी डेप्थ होती है प्लॉ की वो 15 सेंटीमीटर होती है, और जो बिगर होते हैं उनकी डेप्थ होती है 25 to 30 सेंटीमीटर. While inversion it is necessary. Victory plow is an animal drawn pole plow with a short shaft. And third is disc plow. The disc plow bears little resemblance to the common moldboard plow. The disc plow bears little resemblance to the common board plow. Means ये थोड़ा moldboard plow की तरह दिखता है. A large concave steel disc replaces the shear and the mold bowl. The disc turns the furrow slice to side with scoping actions. The usual sizes of the disc 60 cm in diameter, and this turns a. This is the image of disc plow. This disc plow works well in soil free from stones. No harrowing is necessary to break the clods of soil as in the mold bowl plow. Break the clods means no harrowing is necessary to break the clods. मीन जो सॉइल के जो टाइट हार्ड पैन जो सॉइल के उसको ये ब्रेक करता है of the upturned soil as in a mold board plow. Then fourth point is chisel plow. It is mainly used for deep plowing 60 to 70 centimeter. Chisel plow means deep plowing. Chisel plow इसका यूज़ हम mainly deep plowing के लिए करते हैं, like 60 to 70 centimeter with less disturbance to the top layers. Its body is thin with displaceable cutting edge so as have minimum disturbance to top layers. It contains a displaceable shear to shatter the lower layers. This is the image of chisel plow. And last is rotatory hoe. It cuts the soil and pulverizes it. The cutting of soil is done by either blade or type. The blade types are widely used. The depth of cut is up to
12 to 15 centimeter. It is suitable for tight soil. Secondary tillage implements. Different type of implements like cultivator, harrows, plank, and rollers are used for second cultivator. Cultivator in an implements like used for finer operations like breaking clods of working the soil to a fine tilth in the preparation of seedbed. ये फाइनल ऑपरेशंस इससे फाइनल ऑपरेशंस इम्प्लीमेंट किया जाता है इस कल्टीवेटर से, जिससे कि ये सॉइल की क्लॉट्स को ब्रेक कर सके और सॉइल को फाइन कर सके फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सीड बड. कल्टीवेटर is also known as tiller or tooth harrow. It is used for further loosen the previously plowed land before sowing. It is also used to destroy weeds that germinate after plowing. The weed and cultivator has two rows of tines attached to its frame. It staggers from the main object of providing two rows and staggering the position of tines. It's to provide clearance between tines so that clods and plant staggering residue can freely pass through without blocking. Harrow. So harrow are used for shallow cultivated in operations such as preparation of seed bed, covering seeds, and destroying weed seedling. Harrow are of two types: disc harrow and blade harrow. Disc harrow. The disc harrow consists of a number of concave discs 45 to 55 centimeter in diameter. These discs are small in size than disc plow, but more number of discs are arranged on a frame. These discs are filled These discs are fitted 50 centimeter apart on axles. Two sets of discs are mounted on two axles. All the discs revolve together with axles. Blade harrow. Blade harrow are used for different purposes like removal of weeds and stubbles, crushing of clods, working of soil to shallow depth, covering the seeds in cultivation and harvesting of ground. Gantaka and blade harrow is smaller than 𝒑𝒂 though the length of beam is almost same, weight of the beam is lighter than 𝒑𝒂. It is used for removal of weeds and stubbles and for covering crop seeds. It is worked by a pair of cattle. Implements of sowing. First, seed drill. Seed drill consists for wooden beam to which 3 to 6 tines are fixed. These types These types open the furrow into which the same seeds dropped are made into these types, and into these holes the bottom end into bamboo or metal seeds types are fitted. Metal seeds tubes are fitted. This is the image of seed drill, and after that ○ seed drill. Fertilizers are placed at depth of 5 centimeter and 5 centimeter away from seeds rows for effective utilization of fertilizers. Both operations, drilling, seeds, and fertilizers, are done simultaneously by ○ seed drill. It is similar to seed drill but with extra type and hopper for drilling fertilizer.